નમસ્કાર મિત્રો, યુટ્યુબ વિડીયોમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે। આપણે જોઈ રહ્યા છીએ એકાઉન્ટન્સીનું પેપર જોઈ રહ્યા છીએ। એકાઉન્ટન્સીનું ટાટ પરીક્ષાનું મોડેલ પેપર જોઈ રહ્યા છીએ। એકાઉન્ટન્સી વિષયમાં ટાટ પરીક્ષાની અંદર જે વિભાગ 2A માં 20 પ્રશ્નો તમારે પૂછાશે, તો એ પ્રશ્નો સમથિંગ આ પ્રકારના હશે। તો આ પ્રશ્નો તમે વ્યવસ્થિત રીતે જોઈ લેશો તો તમને अनुमान लगावी शकशो कि तमारे पेपर में प्रश्नों केवा आवशे। तो ये प्रश्नों आपने जोईए। प्रश्न नंबर 1, कार्तक सुद पांचम ने शू कहेवाय? कार्तक सुद पांचम ने शू कहेवाय? तो एने लाभ पांचम कहेवाय। प्रश्न नंबर 2, कारखाना अधिनियम मुजब कामदार केटली हक रजाओ भेगी करी शके छे? तो जवाब आवशे 30 रजाओ। प्रश्न नंबर 3, देशीनामु कई भाषा में लखाय? तो देशीनामु मातृभाषा में लखाय, एटले के मातृभाषा एनी जे होय ए भाषा में ए देशीनामु लखता हो। प्रश्न नंबर 4, भागीदारनी मूडी उपजनु व्याज ए भागीदार माटे शुं कहेवाय? तो जवाब आवशे आवक कहेवाय। प्रश्न नंबर 5, केन्द्र सरकार कई कलम हेठळ अमुक मालने आबकारी जकातमांथी मुक्ति आपी शके छे? तो जवाब आवशे कलम 5A। प्रश्न नंबर 6, रोजमेर में केटला सर पाडवामां आवे छे? तो जवाब आवशे 8 सर पाडवामां आवे छे। એટલે કે રોજમેરમાં જે વાળીને જે લીટી જેવું પાડવામાં આવે છે એને સર કહેવાય, તો એ 8 સર હોય છે। પ્રશ્ન નંબર 7, સમાધાન અધિકારીની નિમણૂક કોના દ્વારા થાય છે? તો જવાબ આવશે સરકાર દ્વારા થાય છે। પ્રશ્ન નંબર 8, ઉધાર નોંધનું બીજું નામ જણાવો? તો જવાબ આવશે વેચાણ નોંધ। પ્રશ્ન નંબર 9, हुंडी वही ए मात्र शाना अंगेनी विगतो दर्शावती नोंध छे? तो जवाब आवशे मात्र हुंडी अंगेनी विगतो दर्शावती नोंध छे। प्रश्न नंबर 10, नफा नुकसान खाताने कया पत्रकने ओळखवामां आवे छे? एटले के नफा नुकसान खाताने कया पत्रक तरीके ओळखवामां आवे छे? तो जवाब आवशे आवकना पत्रक तरीके ओळखवामां आवे छे। प्रश्न नंबर 11, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंटना पक्षकारोनी व्याख्या कई कलम में आपवामां आवी छे? तो जवाब आवशे कलम नंबर 7। प्रश्न नंबर 12, जीएसटी केवा प्रकारनो कर छे? तो जवाब आवशे अप्रत्यक्ष कर छे, एटले के परोक्ष कर छे। जीएसटी ए परोक्ष कर छे। प्रश्न नंबर 13, वस्तु अने सेवा कर एटले के जीएसटी क्यारे लागू करवामां आव्यो? तो जवाब आवशे 1 जुलाई 2017 ना रोज लागू करवामां आव्यो। प्रश्न नंबर 14, वेचेल मालनी पड़तर एटले शुं? तो जवाब आवशे वेचेल मालनी पड़तर एटले चोख्खुं वेचाण ओछा काचो नफो। प्रश्न नंबर 15, डिबेन्चर कंपनी माटे शुं छे? तो जवाब आवशे डिबेन्चर ए कंपनी माटे देवुं छे। प्रश्न नंबर 16, धंधानी आर्थिक स्थिति दर्शावे छे? तो नीचेनामांथी धंधानी आर्थिक स्थिति शुं दर्शावे? एटले के कोण दर्शावे? तो पाकું સરવૈયું એ ધંધાની આર્થિક સ્થિતિ દર્શાવતું હોય છે। તો જવાબ આવશે પાકું સરવૈયું। પ્રશ્ન નંબર 17, કરારમાં કેવા પક્ષકારોનો સમાવેશ થતો નથી? तो जवाब आवशे करार में पागल पक्षकारनो समावेश करवामां आवतो नथी। सजा पामेला होय तो एनो समावेश थतो होय छे, माथा भारे होय तो पण समावेश थतो होय छे, दगो कर्यो होय तेवा पक्षकारोनो पण समावेश थतो होय छे, परंतु पागल होय तेवा पक्षकारनो करार में समावेश थतो नथी। प्रश्न नंबर 18, कंपनीना साचा मालिक कोने गणवामां आवे छे? तो जवाब आवशे इक्विटी शेर होल्डर ने कंपनीना साचा मालिक गणवामां आवे छे। प्रश्न नंबर 19, रोकाण વધઘટ અનામત શું છે?
તો જવાબ આવશે એક જોગવાઈ છે. પ્રશ્ન નંબર 20, ભારતીય કરારના કાયદા મુજબ કેવો કરાર રદબાતલ ગણાય છે? તો જવાબ આવશે અવેજ વગરનો કરાર, એટલે કે અવેજ વગરનો કોઈ પણ કરાર એ રદબાતલ ગણાય છે. જો મિત્રો તમને મારો વિડીયો ગમે તો શેર કરજો, લાઈક કરજો, સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને કોમેન્ટ કરવાનું તો ચૂકતા જ નહીં. થેન્ક યુ.